Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is me again, Umar Farooq Sumro, subject teacher of English OPE, class 5. Dear students, I hope all of you are fine by the blessings of Almighty Allah and by the prayers of your parents and elders. Dear students, as I told you in our previous lecture, the quote of the day, it was that respect everyone and you will be respected. And then I told you that seek knowledge from cradle to grave. Okay, so as I am telling you all the quotes, you must have to memorize each quote properly. And after them, I told you that without education, life is like a night. Without education, life is like a night without stars, shine, and moon and light. Okay, so dear students, as you are watching on your screen, this is unit number 2, lesson number 1, EPALS computers. As we read all 5 lessons in unit 1, now it is time for us to read about unit number 2. First of all, dear students, we have a topic EPALS, then computers. What does this mean? EPALS means electronic pulse. Okay, EPALS means electronic pulse. Paul means a friend. Paul means a friend, a person that you make friends with by sending emails on computer. Often somebody you have never met. Pen pal exchanges have been used for years to promote cross-cultural communication. Dear students, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे हैं टॉपिक है EPALS. E stands for electronic pulse, means friend. Pal means friend. So electronic pulse means a person that you make friends with by sending emails. Often somebody you have never met. ऐसे लोग जिनसे आप कभी भी नहीं मिले हो और आपने सिर्फ उनको कंप्यूटर के ज़रिए ईमेल्स भेजे हैं। बेसिकली ये EPALS क्यों यूज़ होते हैं? जब भी आप किसी दूसरे मुल्क की कल्चर या एजुकेशनल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं या वहाँ उस मुल्क से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों के हालात मालूम करना चाहते हैं, then you need EPALS. You need such friends that help you when you want to know about the culture, about educational system, and to contact with other people of other countries, you use an EPAL. Okay, dear students, now you have to read out all the lesson. There are not too difficult words, as the first one is abroad. Are you watching here? Abroad means foreign. Foreign means outside our country. Okay, not in our country, outside from our country. Abroad means foreign, means other countries. Interest means interest, in Urdu, shock. Okay, so I am telling you, as I told you earlier, that we use EPAL computers when we want to know about other people of other countries and we want to know about their culture, about their educational system. Then we want to make an EPAL, an electronic pal, a friend that help us know more about the system of education and about the culture of other countries. Then we use EPALs. Now here we have 2 girls who are talking in the lesson. First one is Judai. What is it? I am pointing out here the name Judai. What is it? Judai. Number 2, Nadia. So first one is telling that she is now going to find an EPAL in Italy
because she wants to know more about Italy, about the culture of Italy. She wants to communicate with the friend by sending emails. Okay, and now second girl Nadia asks her friend Judai that what is an e-pal? E-pal एक क्या है? ये जो e-pal है ये क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि pal means friend, e stands for electronic. Electronic pal means ऐसा दोस्त जो आपको दूसरे मुल्क से ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करने में, दोस्त बनाने में मदद करता है. Okay, then the girl Judai is answering the question of Nadia that it's a modern kind of pen pal. People used to write letters to their pen pals. Now they email each other. I want to practice my Italian. Pen pal or e-pal are the same. Why did people use pen pal? Pen pal exchanges have been used for years to promote cross-cultural communication. As I told you, if we want to know about the culture of other countries, we must have an e-pal to help us out. In educational settings, pen pal projects have been served additional purposes. One is providing English language learners ELLS with a safe but realistic context in which language skills can be practiced and learner motivation increased. So why did people use pen pals? उन्होंने पेन पॉल या इस किस्म के दोस्त क्यों यूज़ किए कि जब वो किसी दूसरे मुल्क के कल्चर के बारे में जानना चाहते थे या वो लोग अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते थे एक ईमेल के ज़रिए या ख़त लिखने के ज़रिए जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो. देन पीपल यूज़ टू राइट लेटर्स टू देयर पेन पॉल्स. तब क्या होता था, लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, ख़त लिखते थे. ओके, नाउ दे ईमेल ईच अदर आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस माई इटालियन. अब वो लोग क्या करते हैं कि अब वो एक दूसरे को ईमेल भेजते हैं. उन जो दो लोग एक दूसरे को ईमेल कहते हैं उन्हें पेन पॉल कहा जाता है. यानी ईमेल भेजने के ज़रिए जो दोस्त बने हों वो पेन पॉल्स होते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर we don't have too many difficult words in the lesson. I told you that there was almost 1 or 2 difficult words in the whole lesson. Now as you can see here, vocabulary, computers and IT. IT stands for information technology. Okay, this word IT stands for information technology. Number 2, countries and nationalities. For example, if our country is Pakistan, so our nationality will be Pakistani. Okay, here is countries and nationalities. Are you watching here? I am pointing out the words countries and nationalities. So if we live in a country, the name of our country is Pakistan, so our nationality will be Pakistani. Okay, so at the end of this video I will share some pictures with you of defining countries and their nationalities. Okay, you can watch also those pictures to help you out to know about more than countries and their nationalities. Number 2, grammar. What do we have to learn about grammar in our this lecture? Going to versus will. Revision. Revision means you have earlier learned this thing and now we are going to revise. Going to versus will. Okay, so dear students, I have made an assignment for your easiness that as you are watching on your screen, I have put a headline here, use of going to versus will. Use of going to versus will, as you are watching on your screen. When do we use going to and when do we use will? So first of all, dear students, going to is used with predictions. हम going to prediction के लिए यूज़ करते हैं. prediction यानी जो हम
नियर फ्यूचर, थोड़ा सा आगे वक्त में करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि 2 सालों बाद, 5 साल बाद, 6 महीने बाद, नियर फ्यूचर बताना हो, शाम को, अगले फ्राइडे पे, नेक्स्ट वीक में, यहाँ तक हम गोइंग टू यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम यूजिंग द सेंटेंस I think it is going to be foggy tomorrow, or it is cloudy, I think it is going to rain. It is going to rain, इसका मतलब है कि बारिश होने जा रही है। Another example, I am going to tell you the name of the topper boy of the class, कि मैं आपको क्लास के टॉपर बॉय का नाम बताने जा रहा हूँ। मीन्स ये मैं अब बताने लगा हूँ। ओके, ये हम बिल्कुल करीब के बारे में बताते हैं कि मैं बताने जा रहा हूँ अच्छे लड़कों के नाम। और आई एम गोइंग टू अनाउंस द रिज़ल्ट्स ऑफ 2020, या मैं 2020 के रिज़ल्ट्स अनाउंस करने जा रहा हूँ। दिस वर्ड विल बी यूज्ड विथ नियर फ्यूचर एंड विथ प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस मीन्स जो हम आगे के लिए कुछ पॉसिबल आइडियाज़ लगाते हैं। जैसे हम बादल देखते हैं, when we see clouds in the air, we see that it is going to rain, कि बारिश होने जा रही है। we use prediction, हमें मालूम नहीं होता कि एक्चुअल बारिश होगी कि नहीं, बट we use prediction, हम ये पॉसिबल आइडिया लगाते हैं कि if there are clouds in the air it can rain, अगर हवा में, आसमान में बादल हैं तो बारिश हो सकती है, या हो सकता है हम शाम कराची जाएं। ये प्रिडिक्शंस होती हैं। इनको नियर फ्यूचर में यानी बिल्कुल करीब बताने में हमें गोइंग टू यूज़ करना पड़ता है। एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीशन यूज़ विल। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीशन यूज़ विल। फॉर एग्जाम्पल, आई विल राइट अ लेटर, आई विल फायर माई सर्वेंट फ्रॉम जॉब, कि मैं अपने नौकर को नौकरी से निकाल दूंगा। नाउ आई एम यूजिंग दिस, आई एम गोइंग टू मेक डिसीशन, यहाँ पर मैं कोई भी डिसीशन यानी फ़ैसला बता रहा हूँ। या मैं किसी को कहूँ, इफ़ यू डोंट स्टॉप दैट नॉइज़ आई विल कॉल द पुलिस, तो अगर आपने आवाज़ बंद न की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा या मैं पुलिस को बुलाऊंगा। दैट मीन्स मैं इनको धमकी दे रहा हूँ, किसी इंसान को भी जो जुमला यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो वो मैं कोई फ़ैसला करूँगा यानी मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तो ये फ़ैसले में यूज़ होता है। वी समटाइम्स ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर प्लान्ड इवेंट्स इन द नियर फ्यूचर। When we talk about future facts or things we believe to be true about the future, we use will. जैसे मैंने आपको बताया, I will buy a new car. So if we or things we believe to be true, अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये फ्यूचर में चलकर ये बात सच होगी, तो इसके लिए हमें will यूज़ करना होगा। पॉसिबल आइडिया, जब आप कोई आइडिया लगाओगे कि बारिश होने जा रही है, ये पॉसिबल आइडिया है, बट आप कहो बारिश होगी, ये आप यानी मुकम्मल बता रहे हो। वी बिलीव टू बी ट्रू, यानी ऐसी बात जो सच होगी अबाउट द फ्यूचर, बट फ्यूचर में कि बारिश होगी, हमारे दादा अबू कराची से वापस आएंगे, ये आप क्या बता रहे हैं? आप डिसीशन बता रहे हैं और बिल्कुल ट्रू, सच्ची बात बता रहे हैं। वी यूज़ विल, तो यहाँ हम जब बिल्कुल पक्की बात बताएंगे तो हम विल यूज़ करेंगे, और जब कुछ आइडिया लगाएंगे सिर्फ कि हम ख़त लिखने जा रहे हैं, लड़के पेड़ काटने जा रहे हैं, या शागिर्द क्लास में ग्रामर सीखने जा रहे हैं या ग्रामर सीखने लगे हैं, तो अब ये पॉसिबल आइडिया है। इट इज़ नॉट अ थिंग दैट इज़ ट्रू, ये वो बात नहीं कि बिल्कुल पक्की बात हो, ऐसे नहीं। जिसमें हम थोड़ी सी प्रिडिक्शन यानी पॉसिबल आइडिया लगाएं तो हम गोइंग टू यूज़ करेंगे, और जब कोई पक्की बात, पक्का डिसीशन बताएं तो हम विल यूज़ करेंगे। दैट्स ऑल। ओके, बोथ will and going to can be used for making future predictions without having a real
डिफरेंस इन मीनिंग। अब ये दोनों फ्यूचर में प्रिडिक्शन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, जबकि इनकी मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ विल है, यहाँ गोइंग टू है। आई थिंक इट विल बी फॉगी टुमारो। फॉगी मीन्स जब ठंड होती है तो उसमें फॉग होता है, यानी वाइट कलर का, जैसे आपको एक क्लाउड के टाइप दिखता है जो नीचे ज़मीन तक होता है, हम देख पाते हैं, उसे हम फॉग कहते हैं। फॉगी मीन्स द डे दैट इज़ फुल ऑफ फॉग, जो उस धुंध से भरा हुआ होता है उसे फॉग कहते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी फॉगी टुमारो एंड देयर इज़ नो डिफरेंस। Dear students, there is no difference between the meaning of I think it will be foggy tomorrow and I think it is going to be foggy tomorrow. There is no such difference in these sentences. So, as I told you, it is your grammar lecture. Now, you have to complete the assignment or homework is that match the pictures with words in the box where possible. Choose the correct word or phrase to complete each sentence. You have to use each word in correct to fill correct blank to solve this activity. Okay, dear students, this is your homework that you have to solve now, and you have to send it on your WhatsApp group that is placed on book page number 9. Still, our today's lecture ends here. We will meet inshallah if God wills in our next lecture. Allah Hafiz.